Good afternoon, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC NET Paper 2 English. For today's session, I will analyze the paper for UGC NET 2 for you. जो जून में हमारा पेपर हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एनटीए ने कल रात हमें अप्रॉक्स 1:30 आंसर की रिलीज करके तो दे दिया, लेकिन उस आंसर की का हमें कोई अभी तक ढंग से अपलोड नहीं है, साइट नहीं खुल रहा है, ये सारे प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। तो उसी के लिए हमने ये अभी लाइव आने का डिसाइड किया है कि कल रात जो आंसर की आया था, अपलोड हुआ था, वो हमारा रिट्राइव हो गया था। हमारे पास एक स्टूडेंट का पेपर है जिसके थ्रू हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि क्या सही आंसर है, नहीं है। और आप लोग जो इतने परेशान हो रहे हो कि कैसे होगा कैसे होगा, तो उसके लिए भी ये सोल्यूशन है कि आप इस सेशन को अभी ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर सही नहीं है। आप अपने मेमोरी पे इस पर्टिकुलर सेशन को ज्वाइन कर सकते हो देखने के लिए कि क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पेपर 1 जो हमारा जनरल पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे, और पेपर 2 जो है हमारा इंग्लिश, उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे डीआई से 5 क्वेश्चन थे जो हर बार आते हैं, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था what is the difference between the average number of hardbound books sold by shop A, B and D and the average number of paperback books sold by shop C and D? इसमें आपको एवरेज निकालना था पर्टिकुलरली, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर एनटीए ने फोर्थ ऑप्शन को सही बताया है, दैट इज 1750। जिन्होंने भी 1750 को टिक किया था उनका ये बिल्कुल सही ऑप्शन है और उनका ये क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नंबर ऑफ हार्डबाउंड बुक्स सोल्ड बाय शॉप ए इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ पेपरबैक बुक्स सोल्ड बाय शॉप सी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर एनटीए ने सेकेंड ऑप्शन दैट इज 36 को सही बताया था। जिन्होंने भी इस पर्टिकुलर आंसर को सही, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज किया है, उनका सही है ये आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टॉप सेल बाय शॉप ए एंड सी टुगेदर टू द टोटल सेल बाय शॉप बी एंड डी। रेशियो वाला क्वेश्चन था ये हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर एनटीए ने 77:106 फर्स्ट ऑप्शन को सही बताया है। Moving towards next question, number of total books hardbound and paperback together sold by the highest selling shop is what percent higher than the lowest selling shop? और इसका सही आंसर एनटीए ने थर्ड ऑप्शन दैट इज 120% को सही बताया है। आप सभी को हो सकता है कि एग्जैक्ट आंसर याद ना आए कि हमने क्या मार्क किया था, नहीं किया था, बट डोंट वरी, एक पिक्चर मेमोरी आपकी डेवलप हो जाएगी क्वेश्चंस को देख के, क्वेश्चंस को पढ़ के। तो आप उसके बेसिस पे अपना एनालिसिस कर सकते हो कि आपका क्या सही है और क्या गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ हार्ड बाउंड बुक्स सोल्ड बाय शॉप्सी एंड डी टुगेदर, जिसका सही आंसर एनटीए ने थर्ड ऑप्शन दैट इज 3:2 को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 है। इसमें आपको सॉल्व करने का, ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली काफी लेंदी क्वेश्चन था क्योंकि आपको एक एक इक्वेशन सॉल्व करके देखना पड़ रहा था, और इसका सही आंसर एनटीए ने फोर्थ ऑप्शन को बताया है। यानी कि आप ए को 4 से मैच करोगे, बी को 3 से मैच करोगे, सी को 2 से और डी को 1 से मैच करोगे। जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज किया है उनका सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू एक्सपीरियंस द एजुकेशनल वैल्यू वन मस्ट एक्सट्रैक्ट इट्स नेट मीनिंग थ्रू रिफ्लेक्शन, कम्युनिकेशन, कॉन्सिक्वेंसेज और डिसीजन। इसका सही आंसर एनटीए ने फर्स्ट ऑप्शन दैट इज रिफ्लेक्शंस बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अर्पा नेट, और इसका सही आंसर एनटीए ने फर्स्ट ऑप्शन एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा सही कॉम्बिनेशन चूज करने का। ये थोड़ा नया पैटर्न का क्वेश्चन था एनटीए की तरफ से अब की बार, और इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही बताया गया है आंसर की में, ए एंड डी ओनली। That is, learning a second language takes little time and efforts, and all bilingual easily maintain both language. It is a myth. यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे वो मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मेजर थ्रस्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वेयर। आपको इसमें से एनपीई पॉलिसी से आपकी बार काफी सारे क्वेश्चंस बने थे नेट में, और एनपीई जो हमारा पॉलिसी है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन था, और आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपका सही है रिगार्डिंग एनपीई। और इसका सही आंसर एनटीए ने थर्ड ऑप्शन को चूज किया है, दैट इज ए, बी एंड डी। This is the option given by NET answer. A statement कह रहा है state level planning and coordination through state council for higher education. B is expansion of universities, open universities and distance education system. And D option says conferring autonomous status on selected colleges. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा मैच द फॉलोइंग है, और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एनटीए ने नए पैटर्न पे हमें दे दिया है, और इसका सही आंसर इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन को बताया है। यानी कि आप ए को 2 से मैच करोगे, बी को 4 से, सी को 3 से और डी को 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन मॉडल ऑफ लिसनिंग इन सीक्वेंस। आपको लिसनिंग को कैसे प्रोसेस है लिसनिंग का, उसको आपको लिसनिंग को सीक्वेंस में अरेंज करना है, जिसका सही ऑप्शन एनटीए ने सेकेंड ऑप्शन को बताया है, दैट इज हियरिंग, देन अंडरस्टैंडिंग, देन रिमेंबरिंग, देन इंटरप्रेटिंग एंड लास्ट वन इज रेस्पॉन्डिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था जिसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है और ये आपका सॉल्व करने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको करते हो। तो आपका इसमें सही आंसर एनटीए ने ऑप्शन डी को बताया है, दैट इज ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग अ कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन के ऊपर ये क्वेश्चन था हमारा और इसका सही आंसर एनटीए ने हमें फोर्थ ऑप्शन बताया है, दैट इज बी, डी एंड ई, रिलायबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अवेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था अंडर विच सेक्शन ऑफ द यूजीसी एक्ट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स वेर एस्टैब्लिश्ड। ये काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, बहुत जन इस पर्टिकुलर चीज को लेके कंफ्यूज हुए थे कि ये किस तरह का है, क्या ऑप्शंस गलत है इसके, ये शायद ड्रॉप होगा, बहुत डाउट था। पर इसका सही आंसर एनटीए ने फर्स्ट ऑप्शन को कंसिडर किया है, दैट इज 12CCC। इसका एक इन डेप्थ एनालिसिस इसके बाद प्लान करेंगे। फर्स्ट हमें आंसर की का एनालिसिस देखना जरूरी है कि एनटीए ने अभी क्या आंसर की दिया है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के पास इसका आंसर की नहीं पहुंच पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा मैच द फॉलोइंग का, जिसमें आपको कुछ इंस्टीट्यूशन के नेम्स थे और उसको उनके ईयर ऑफ इनैक्टमेंट के साथ मैच करना था। The institutions were National Institute of Technology Act. Next one is Indian Institution of Management Act. Next one is Indian Institute of Information Technology Act. And the last one is Institute of Technology Act. ईयर ऑफ इनैक्टमेंट की ये सारे एक्ट्स कब इनैक्ट हुए थे मैच करना था और एनटीए ने इसका सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन को बताया है आपका, जिसमें आप ए को 3 से मैच करोगे, दैट इज 2007, बी को 1 से मैच करोगे 2017, सी को 4 से मैच करोगे दैट इज 2014 एंड डी को 2 से मैच करोगे दैट इज 1961। जिन्होंने भी इस पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज किया है उनका ये क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा अगेन मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको मैच करना था कुछ टीचिंग मेथड्स और उसके डेफिनेशंस को, और इसका सही आंसर एनटीए ने सेकंड ऑप्शन को बताया है, जिसमें आपको ए गोल्स आर डिसाइडेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नीड्स ऑफ अ नेशन विल बी मैच्ड विद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, feedback is obtained at local level will be matched with instructional technology, team teaching, that is modern teaching technology, and time for completion of a task is same for all students, that is traditional teaching technology. नेक्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमारा, सिंपल सा फुल फॉर्म पूछा हुआ है सीडी रोम का। तो ये जो फुल फॉर्म है इसका सही आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन वाज पेरिस अग्रीमेंट अडॉप्टेड, दैट इज द सेकंड ऑप्शन 12 December 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ हाउ द माइंड क्रिएट्स नॉलेज हैज रिजल्टेड इन व्हाट आर करेंटली रेफर्ड टू एज डैश व्यू ऑफ एजुकेशन। इसमें से सही आंसर जो एनटीए ने दिया है वो है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज कंस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईपी एड्रेस पे था। सिंपल क्वेश्चन था कि आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, तो 32 बिट इसका सही आंसर है। आई होप बहुत सारे लोगों ने इसको सही किया होगा, तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याप्ति इन इंडियन लॉजिक रेफर्स टू। इंडियन लॉजिक से हमने क्वेश्चंस बनते हुए पहले भी देखा है, ये वाला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है और इसका सही ऑप्शन
एनटीए ने थर्ड ऑप्शन को चूज किया है, दैट इज इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक मैच द फॉलोइंग है, जिसमें आपको कुछ रिसर्च के मेथड्स दिए हुए हैं और उसका डेफिनेशन दिया हुआ है और आपको मैच करना था। और इसका सही आंसर एनटीए ने थर्ड ऑप्शन को दिया है, दैट इज ग्राउंडेड थ्योरी विल बी मैच्ड विद ऑप्शन ए, रिसर्चर कंटिन्यूज डेटा कलेक्शन एंड analyzes till the satisfactory findings are derived. Next one is developmental. It will be matched with B, study of change in emotional maturity of the students with the passage of time. Next one is experimental, which will be matched with C, that is the study of the effect of one variable on other variable in controlled situation. And last one is survey, study of social problems faced by working women. इस तरह के क्वेश्चंस नेट पहले भी देता था, नेट ने आज भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं और ये डायरेक्ट रिसर्च वाले टॉपिक से आया है आपका डायरेक्ट। तो जिन्होंने भी इसका थर्ड ऑप्शन सही किया था उनका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस। और इसका सही ऑप्शन एनटीए ने थर्ड ऑप्शन को चूज किया है, दैट इज ए, सी एंड डी ओनली, दैट इज एड होमिन, स्ट्रॉमैन एंड रेड हेरिंग। जिन्होंने भी इस पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज किया था उनका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आईसीटी से रिलेटेड और आपको उसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था। एनटीए ने इसका सही आंसर ऑप्शन 4 को बताया है, यानी कि आपका सी और डी स्टेटमेंट गलत है। सी इज अ लो लेवल लैंग्वेज एंड एसक्यूएल इज अ लो लेवल लैंग्वेज, ये दोनों ऑप्शन गलत है। जिन्होंने भी फोर्थ ऑप्शन चूज किया है उनका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 15 नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, आपको ये सॉल्व करना था बेसिकली। और इसका सही ऑप्शन थर्ड ऑप्शन एनटीए ने बताया है, दैट इज 1239। आप सभी मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हैं कि इज दिस सेशन बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट, क्योंकि एनटीए का अभी तक सर्वर डाउन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं रिसर्च से रिगार्डिंग और आपको सही स्टेटमेंट फाइंड करना था और इसका एनटीए ने सही ऑप्शन थर्ड बताया है, दैट इज बी, सी एंड ई। That it is a scientific process, logical reasoning is used in decision making during research process, and it collects and analyzes evidences to derive findings. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अरेंज द phases of life cycle analysis for information on environmental effects of products from first to last. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर एनटीए ने फोर्थ ऑप्शन को कंसिडर किया है, दैट इज बी, ए, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंडीशन कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन बी कैलकुलेटेड। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर एनटीए ने फर्स्ट ऑप्शन को बताया है, दैट इज सी एंड डी। इफ देयर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड इफ डेटा आर ऑब्टेन्ड इन इंटरवल और रेशियो स्केल फॉर बोथ द वेरिएबल्स। तो जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, उनका ये क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना था, कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स है हमारे, उसको लाइक एनडीएल, शोधगंगा, एबीसी, दीक्षा, ये सारे अरेंज करना था और इसका सही आंसर एनटीए ने थर्ड ऑप्शन बताया है, दैट इज बी, डी, ए, सी, शोधगंगा, दीक्षा। देन
NDL एंड लास्ट में ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ऋग्वेद से कि ऋग्वेद में कितने हाइम्स है, और इसका आंसर एनटीए ने 1028 बताया, जो कि सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन था ये। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। और फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो सही है इसमें, दैट इट नेसेसरली इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द एरिया इन विच इट इज कंडक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, और आपसे पूछा गया था कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट हो तो कौन से प्रोसेस को आपको अडेप्ट करना चाहिए। तो बेसिकली इसमें A, C, D एंड E, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन वाज द राइट आंसर। एनटीए ने भी यही आंसर दिया है आपका, ट्रेनिंग, मिटिगेशन, रेस्पॉन्स एंड डिटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको सिस्टम नेम दिया हुआ है और ईयर दिया हुआ है। आईसीटी से हमारा ये क्वेश्चन है और आपको इसको मैच करना था। तो बेसिकली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और इसका सही आंसर एनटीए ने फर्स्ट ऑप्शन बताया है, दैट इज ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द एरियाज फॉर फॉलोइंग स्टेप्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। ये सारे ही क्वेश्चंस काफी थोड़े अटपटे से अजीब से है, और इसका सही आंसर एनटीए ने ऑप्शन 2 बताया है, ए, बी, सी एंड डी। नेक्स्ट है आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। 4 स्टेटमेंट्स थे। एमएस वर्ड saves the file in doc format, SQL server is a local network server मतलब is a mathematical software and bootstrap loader is an example of entertainment software। इसका सही आंसर एनटीए ने आपका सेकंड ऑप्शन को चूज किया है, दैट इज ए एंड सी। ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ फाइनलाइजिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। कि आप रिसर्च प्रॉब्लम को फाइनलाइज कैसे करोगे, आपको उसका प्रोसेस बताना था, और इसका सही ऑप्शन एनटीए ने थर्ड ऑप्शन को दिया है, दैट इज बी, डी, सी, ई देन ए। यानी कि पहले सेलेक्टिंग द एरिया ऑफ रिसर्च, then study of reference material and reports of previous researches, then finding the research gap, then identifying a research problem, and in the last defining the research problem। नेक्स्ट हमारा फिर से मैच द फॉलोइंग था, जिसमें आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है और आपको मैच करना था, और इसका सही आंसर एनटीए ने ऑप्शन 2 को बताया था, दैट इज ए विल बी मैच्ड विथ 2, बी विल बी मैच्ड विथ 4, C will be matched with 3 and D will be matched with 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। ये काफी इजी क्वेश्चन था और इसका आंसर एनटीए ने सही आंसर बताया है फोर्थ ऑप्शन को, दैट इज टाइम। आई होप आप क्वेश्चंस देख रहे हो तो आपको खुद भी याद आ रहा होगा कि आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो आपको एक रफ आइडिया मिल सकता है। जितना इम्पेशेंट आप हो रहे हो कि क्या आंसर है क्या आंसर है, हो सकता है कि ये आपको उस चीज से ओवरकम करने में हेल्प करे और आप एक बार अपना रफ एनालिसिस लगा सको पेपर का कि हाँ मेरा इतना सही है। बाकी तो जब सर्वर हमारा वापस से ठीक हो जाएगा तो एक बार पेपर आप लोग चेक करोगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर कनेक्टेड बाय। इसका सही आंसर आपको थर्ड ऑप्शन है, दैट इज अ कॉप्यूला।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से पूछा गया था, हाउ मेनी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस, एंड फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज 8. हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर पे आते हैं हम लोग, जिसमें आपको अरेंज करना था, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एज, और इसका सही ऑप्शन एनटीए ने सेकंड ऑप्शन बताया है, दैट इज बी, ए, डी, देन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन 43 क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, कम्युनिकेशन के ऊपर ये वाला टॉपिक का क्वेश्चन है, और हमारा इसमें सही आंसर एनटीए ने फर्स्ट ऑप्शन को बताया है, जिसमें A will be matched with 4, B will be matched with 3, C with 2 and D with 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएटिंग अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, सॉरी, और इसका सही आंसर एनटीए ने फोर्थ ऑप्शन को बताया है, दैट इज डी, बी, ए, सी. नेक्स्ट है हमारा 45 क्वेश्चन, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन था, अ सम ऑफ ₹10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2.5 years at an interest rate of 8% compounded annually. The amount on maturity will be. इसका सही आंसर एनटीए ने थर्ड ऑप्शन को बताया है, दैट इज 12130.56. इसके बाद हमारा कॉम्प्रीहेंशन पैसेज था, और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, अ जेन्युइन लवर ऑफ ट्रुथ विल, इसका सही आंसर एनटीए ने फोर्थ ऑप्शन को बताया है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन पैसेज से ही था, अकॉर्डिंग टू द पैसेज कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ओरिजिनेट फ्रॉम द ओल्डर जनरेशन, दैट इज द थर्ड ऑप्शन. कॉम्प्रीहेंशन पैसेज से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 48 नंबर, दैट इज अकॉर्डिंग टू द ऑथर द एटीट्यूड ऑफ सेल्फ ओपिनियटेड पर्सन इन द प्रैक्टिकल सोशल लाइफ शुड बी. इसका सही ऑप्शन एनटीए ने फर्स्ट ऑप्शन को बताया है, दैट इज फ्लेक्सिबल. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था हमारा, वंस पोजिशन इज यूजुअली डिफरेंट व्हेन अ पर्सन. थर्ड ऑप्शन इसका सही बताया गया है हमें, तो जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन को मार्क किया था वो सही है. और लास्ट क्वेश्चन हमारा पेपर 1 का है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर अ जनरेशन इज अ होल बट इट इज ऑलवेज कांस्टेंट. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. अब हमारा पेपर 2 इंग्लिश का एनालिसिस पे हम लोग आते हैं कि जो जिनका कोर पेपर इंग्लिश था पेपर 2, उनका क्या स्टेटस है, उनका आंसर की कैसा है. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पेपर 2 में है हमारा, दैट इज which of the following is not a kind of literary research. The correct option is the third option, that is experimental research. Next question is a match the following question, in which you have to match list 1 with list 2, and the correct option for this particular question is option number 2. A will be matched with 3, B with 4, C with 2 and D with 1. नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ लिस्ट ऑफ वर्क्स दिए हुए हैं और आपको लिस्ट ऑफ राइटर्स दिए हुए हैं और आपको मैच करना था. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट ऑप्शन, that is Cynthia's Revels will be matched with Ben Jonson, The Maid's Tragedy, Beaumont and Fletcher, Women Be Aware, Women with Thomas Middleton, and The Shoemaker's Holiday with Thomas Dekker. Next question था हमारा, who prepared the first blueprint on English education in India in 1792? And the correct option given by
NTA is Charles Grant. That is the option 2. Moving towards our next question. Jacques Derrida, आर्काइव फीवर अ फ्रूडियन इम्प्रेशन इज रिलेटेड टू. आपको बताना था कि इनका ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किस मेथड से रिलेटेड है एंड द करेक्ट आंसर गिवन बाय यूजीसी नेट इज द फर्स्ट ऑप्शन आर्कीवल मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैच द फॉलोइंग विथ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. और इसका करेक्ट आंसर यूजीसी ने हमें फोर्थ ऑप्शन बताया है, दैट इज लिबर्टी ऑफ द प्रेस विल बी मैच्ड विद जॉन मिल्टन. द विजन ऑफ मिर्जा एंड ओरिएंटल एलिगरी विल बी मैच्ड विद जोसेफ एडिसन. On the knocking at the gate in Macbeth will be matched with Thomas de Quincey, and the last one, mental slavery of modern workmen, will be matched with John Ruskin. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. इसमें हमारे कुछ स्टेटमेंट्स है पैट्रिक वाइट के रिगार्डिंग कुछ नॉवेल्स है, मिडनाइट चिल्ड्रन है, फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन है. इस सारे स्टेटमेंट्स का मिक्स एंड मैच स्टेटमेंट्स है, उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने थे और इसका सही ऑप्शन एनटीए ने थर्ड ऑप्शन बताया है हमें, दैट इज ऑप्शन बी, सी एंड ई. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करना था, जिसमें आपको इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पूछा गया था कि वो पहले कहाँ ऑफर हुआ था. ओवरऑल ये इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है सारे, और इसका सही आंसर एनटीए ने आपको फर्स्ट ऑप्शन बताया है, दैट इज ए, सी एंड ई. सो द स्टेटमेंट्स ए, सी एंड ई आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. Next question is, since the publication of Samuel Johnson preface to Shakespeare in 1765, which of the unities have been regarded as optional devices? इस क्वेश्चन में आपको सैम्यूल जॉनसन यूनिटीज के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं वो बताना था, एंड द थर्ड ऑप्शन वाज करेक्ट, दैट इज यूनिटीज ऑफ प्लेस एंड टाइम. इनका वर्क प्रीफेस टू शेक्सपियर में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर अर्नोल्ड्स कल्चर. अर्नोल्ड के लिए कल्चर क्या था उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. वी हैव सम स्टेटमेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, एंड द राइट ऑप्शन गिवन बाय एनटीए इज द फोर्थ ऑप्शन, दैट इज ए, सी एंड डी. Next question was, who has written the two pillars upon which a theory of criticism must rest are an account of value and an account of communication. ये statement है, identify करना था who has given this statement, and it was I.A. Richards. Second option is the correct option. Next question was, which of the following is not a distinct discourse analytical research tradition as suggested by Margaret Rethel et al. And the correct option given by NTA is the third option, that is Saurian research. Next question is, which of the following rules are correct regarding formatting of date and time in body of thesis? ये basically आपका जो 10th यूनिट है हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी वाला, MLA हैंडबुक से ये क्वेश्चन वहाँ से आया है, एंड द करेक्ट ऑप्शन गिवन बाय यूजीसी एनटीए वाज द थर्ड ऑप्शन, दैट इज ए, सी एंड ई. MLA हैंडबुक से ऐसे भी काफ़ी राइजिंग क्वेश्चंस देखे गए हैं रिसेंटली. पहले बहुत कम क्वेश्चंस आते थे एंड दे वर जनरली फ्रॉम ईदर द 8th edition or the 9th edition, but now they have, I think, specified that they are going to ask from the 9th edition specifically. A lot of questions have been seen there from the 9th edition. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा जिसमें हमें कुछ पोएम्स आइडेंटिफाई करने थे WB Yeats के, एंड द करेक्ट ऑप्शन गिवन बाय UGC नेट वाज फोर्थ ऑप्शन.
The next question is, we have to arrange some commissions in the chronology order, और इसका सही आंसर एनटीए ने सेकंड ऑप्शन को बताया है, दैट इज CEDAB. So all India Language Conference will come first. After that we have the Official Language Act. Then we have Kothari Commission. Then we have Gokak Committee report. And in last we have Acharya Ramamurthy Commission. Next question is a match the following. List 1 को list 2 से match करना. We have some feminism related works and feminist writers, और आपको इनके works को match करना है. And the correct option given by NTA was the first option. That is, A will be matched with 2, B with 4, C with 3 and D with 1. Moving towards next question, again a match the following, in which you have to match list 1 with list 2. We have some writers और उनके बारे में कुछ statements दिया हुआ है and we have to match. The correct option given by NTA was second option, that is A will be matched with 2, B with 4, C with 1 and D with 3. The next question, Kipling's story Mrs. Bathurst is set in. The correct answer is South Africa. Second option. इसके बाद next question जो है हमारा, we have some statements given by Barbara Johnson and you have to identify the correct statements out of them. And the correct answer is the first option, that is A, B and D. So only the statement A, B and D are correct. The next question is a quotation based question, जिसमें आपसे डायरेक्ट पूछा गया कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसने कहा है, and this statement is given by John Dryden. Next question है हमारा, identify the subtitle of Oliver Goldsmith's semi-autobiographical poem The Traveller. And the correct option is the first option, The Prospect of Society. Next question is, who among the following Mughal rulers carried out an experiment for the newborn babies to be raised in silence, only to find that the children produce no speech at all? And the correct answer was Akbar, the first option. Next question was a match the following again, in which you have to match some characters with the novels, and the correct answer is third option, that is A will be matched with 4, B with 1, C with 2 and D with 3. So the third option is the right option. Next, the next question was, we have to identify who has coined this term, territorialization. And the correct option is the fourth option, Gilles Deleuze and Felix Guattari. Now there were some statements given again, and in which we have to identify the correct one, and the correct option is the first option. Thus, statement A, C and E are correct statements. The next question that we have is a match the following, in which we have some works mentioned and we have to match that with the author. All these works are from Indian writers, and the correct option is the first option. That is, A will be matched with 2,
B with 1, C with 4 and D with 3. The next question is who coined the term ontotheology, and the correct option for this is the first option, Jacques Derrida. So whoever have marked Jacques Derrida in their paper, ये क्वेश्चन उनका सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैच द फॉलोइंग. ये हमारा लिंग्विस्टिक से क्वेश्चन आया था इन विच आपको पिजन, क्रियोल, आइडियोलेक्ट और रजिस्टर को उनके डेफिनेशंस के साथ मैच करना था. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ ऑप्शन, दैट इज पिजन विल बी मैच्ड विद द थर्ड ऑप्शन, क्रियोल विल बी मैच्ड विद द फोर्थ ऑप्शन, idiolect will be matched with the first option, and register will be matched with the second option. Next question है हमारा, according to the 1991 census, languages are considered scheduled languages. How many languages you have to identify? And the correct option was 18, second option. The next question is which of the following works is written by Joseph Conrad? And the correct option is Tales of Unrest, the first option. Next one was again match the following, in which you have to match list 1 with list 2. And the correct option for this particular question is the first option, that is A will be matched with 2, B with 3, C with 1 and D with 4. The next question was based on Virginia Woolf. It was asked ki what are the statements given by Virginia Woolf about women. So out of the 5 statements, you have to identify any 3 correct statement, and the correct option is option number 2, that is B, C and E. The next question that we have in here is that who coined the term chronotype, and the correct option is Mikhail Bakhtin, the first option. The next question that we have is identify the poem in which the following lines occur. My babe so beautiful, it thrills my heart with tender gladness thus to look at thee. And this particular line was in the poem Frost at Midnight. Second option is the right option here. The next question that we have in here is who wrote to the Committee of Public Instruction on introducing English as official language of the government and that of education. And the correct option is the third option, that is William Bentinck. The next question is again we have to identify the correct statements. Anonymous statements है, different writers से है. Although आप सारे इस writers को जानते हो, we have Geoffrey Chaucer, John Milton, Coleridge, Shakespeare, Alexander Pope, इनके ऊपर है, तो you have to just identify the correct one. And the correct option given is the second option, that is A, D and E. Statement A, D and E are correct. The next question that we have in here is who described Raja Ram Mohan Roy as the inaugurator of the modern age in India? The correct option is first option, that is Rabindranath Tagore. The next question that we have is we have to arrange the works in chronology, and the correct option is fourth option, that is A, the heart of Hindustan, then comes C, Eastern religions and Western thought, then comes D, then comes E, the principal Upanishads, and then comes B, occasional speeches and writings. The next question is a match the following, in which you have to match the terms and the meanings, and these terms are quite
इंटरेस्टिंग, लाइक देख के लग रहा है कि ये कैसा टर्म है, स्पेशली द ऑप्शन ए एंड सी. सो एनटीए हमें सरप्राइज करते रहता है ओवर टाइम विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड ऑप्शन, दैट इज ए विल बी मैच्ड विथ 4, बी विथ 1, सी विथ 2 and D with 3. The next question is, if the glide is distinct enough to be heard, the vowel plus glide will be treated as, and the correct option is option 3, a sequence of two vowels. The next question is, who is of the opinion that the concept of ideology is the most important conceptual category in cultural studies? The correct answer is option 2, that is Graham Turner. Moving towards our next question, we have to arrange the following list. ये MLA के अगेन हैंडबुक से क्वेश्चन है, 9th एडिशन से, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, दैट इज CBDAE. Moving towards our next question, who made the following remark? There is a statement given and you have to identify who has said this statement, and the correct option is the first option, Sir William Jones. The next question that we have in here is, who has first used the term remainder? The correct option is Jacques Derrida. The next question that we have is, identify the correct chronological order as per the publication year of the following works. And the correct option is the fourth option, that is B, A, C, D. The next question that we have is, which of the following works is not written by William Cowper? The correct option is option 3, the Field Marshal's Memoir. The next question that we have is, we have to choose the correctly matched play and playwright, and the correct option is option 1, that is B, C and E. Tiger Claw is written by Lakhan Dev. The Flute of Krishna is written by P.A. Krishnaswamy, and Hayavadan is written by Girish Kannar. The next question that we have in here is that you have to identify the correct statements out of the 5 statements given below, and the correct option is the first option, that is A, D and E. These are the statements based on our literary devices. So the statement A, D and E are correct statement. The next question that we have in here is, which of the following critiques are associated with Frankfurt School of German intellectuals? So you basically have to identify the writers associated with Frankfurt School, and the correct option is the first option, that is A, D and E. The next question that we have in here is again a match the following, in which you have to match list 1 with list 2, and the correct option is the option 2. A will be matched with 2, B with 4, C with 1 and D with 3. The next question that we have is, which of the following is considered as the father of South African English poetry? And the correct option is option 2. The next question is, arrange the following stages of first language acquisition schedule in its chronological order. The correct option is option number 4, that is cooing,
then comes babbling, then comes the one-word stage, then comes the two-word stage, and last comes the telegraphic speech. Next question is based on identification. You have to identify the correct statements, 3 correct statements out of the 4 given below. And the correct option for this particular question is option number 2, that is A, C and D. So statement A, C and D are correct options. The next question is the notion of author constitutes the privileged moment of individualization in the history of ideas, knowledge, literature, philosophy and the sciences. So you have to identify the critical essays in which the line occurs. And the right option is the second option, that is what is an author. In this essay the following line occurs. The next question that we have here is we have to arrange the novels in their chronological order. We have all Indian novels mentioned here, and the correct option is the fourth option, that is B, D, E, A, then C. The next question is arrange the following works of feminism in chronological order. And the correct option is option 3, that is E, A, C, B, then D. The next question that we have is who has designed panopticon and used the term as a new mode of obtaining power of mind over mind? And the correct option is Jeremy Bentham, that is option number 2. The next question is arrange the following books in chronological order. And the correct option is option 3, that is A, D, C, B and E. Later onwards, I'll provide a deep analysis of this paper. Right now, we are just discussing the answer key. Right now, we are just seeing ki kya answer hai. But later on, I'll upload a in-depth analysis of this particular paper. The next question is the study of how human beings acquire language and how we use language to speak and understand is called. The correct option is fourth option, that is psycholinguistics. The next question is in how many volumes George Eliot Middlemarch was published? The correct option is the second option, that is 8 separate volumes. Next question is which of the school of criticism has strongly opposed formalism in both its European and American varieties, rejecting the view that there is a sharp and definable division between ordinary language and literary language. So basically you have to identify that which theories have rejected the theory of formalism. So the correct option is option 3, that is B, C and D. Reader response criticism, speech act theory and new historicism. These 3 theories rejected formalism. Moving towards the next question, who has described his criticism as a byproduct of his private poetry workshop and as a prolongation of the thinking that went into the formation of my own verse? And the correct option is fourth option, that is T.S. Eliot. The next question that we have in here is choose the correct key points related to the approach of feminism and gender studies. So there are 5 statements based on feminism and gender studies, and you have to identify the correct statements out of the 5 statements. And the correct option is option 2, that is A, B and D. The next question that we have is choose the correct statement regarding scope of linguistics from the following. So these statements are based on linguistics and you have to identify any 3 correct statements out of the following. And the first option is the correct option, that is A, B and E.
The next statement is that we have to chronologically arrange the statements of Aristotle's poetics. Poetics के कुछ statements दिए हैं and we need to arrange it chronologically कि कौन सा statement पहले बोला गया है and कौन सा statement बाद में बोला गया है. So the correct option is option number 4, that is A, B, C, E and then D. NTA is getting quite creative nowadays, I think. The next question that we have is, which group of poets among the following is known as the Georgian poets? You have to identify who are Georgian poets, and the correct option is option 2, that is Rupert Brooke, Walter de la Mare, John Drinkwater and James Ellery Flecker. The next question that we have is a too typical to pronounce term, and the question is that what does this term signify? It is quite a new term for you, I think. And the correct option is the fourth option, that is German term signifies novel of education, which you should remember. The next question is the term trace. This is also a new term, I think, which you must have come around, which refers to the trace of the other, has been borrowed by Jacques Lacan from. So the correct option is option number 2. The next question is that you have to correctly identify the statements that is based on language. So आपको इन 5 statements identify करना है which statement is correct regarding language. And the correct option is the option number 2, that is A, B and D. So statement A, B and D are the correct statements regarding language. The next question that we have in here is, who has coined the phrase bricolage? And the correct option is option 1, that is Claude Lévi-Strauss. Next question is, which amongst the following attempted to reconcile discrepancies between various classical authors such as Plato and Aristotle, as well as between philosophy and poetry? And the correct option is the third option, the new Platonist. Next question is based on the statements on the work The Subjection of Woman by J.S. Mill, and you have to identify the correct statements. And the right option is option number 2, that is A, C and D. So statement A, C and D are the correct option. The next question is, arrange the following steps of material collection according to the hierarchy given by Delilah D. Suze Correa and W.R. Owens in the Handbook to Literary Research. ये MLA Handbook से ये question है आपका. And the correct option is the first option, that is D, A, C and B. The next question is, match the following. You have to match the list of authors with the list of work. And the correct option for this is first option, that is A will be matched with 2, B with 4, C with 1 and D with 3. The next question that we have in here is, name the theory which assumes that culture is not separate from nature and that there is no hierarchy of actants such that the human is more privileged. Which theory says the statement? The correct option is the first option, actor network theory. The next question is that you have to choose the correct events corresponding with their year. And the correct option is the first option, that is B, C and E.
The next question that we have in here is again match list 1 with list 2. And the correct option for the question is option number 1. A will be matched with 4, B with 1, C with 2 and D with 3. I request all the viewers to please like my video as well. The next question that we have in here is that you have to arrange the following statements in chronological order, and the correct answer is option number 2, that is D, B, A and C. The next question that we have in here is, according to Ferdinand de Saussure, what is the minimum number necessary to complete the speaking circuit? And the correct option is option number 2. The next question is, arrange the following works of criticism chronologically. So basically you have to arrange these works chronologically, and the correct option is option number 4, that is E, A, C, B and D. The next question is, arrange the following works of criticism chronologically. ये तो ट्रेंड है एनटीए का. एनटीए आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन chronological basis and match the following. So here we are. बस इसी में ये कुछ वर्क्स आपके नोन पूछते हैं, इसी में कुछ वर्क्स अनोनिमस पूछ लेते हैं आपसे. So the correct option here is option number 3, that is C, A, D, E and B. The next question is, match the following again, and there are some lines given and you have to match it with the author. The correct option is option 2, that is A will be matched with 4, B with 2, C with 1 and D with 3. The next question that we have is, who developed the concept of the cultural circuit, which is important to the study of the interactions of culture and memory in oral history research method? And the correct option is option number 4. Next question is, Lord Curzon used the report of Indian University Commission of 1902. You have to state why he used the report. So it was to centralize school education under a Director General of Education. That is option number 4, which is also the correct answer. Next question is regarding some statements given, and you have to identify the correct statements. All these statements are based on Charles Lamb, a very famous essayist. And the correct option is option 3, that is A, C and E. These 3 statements are the correct statement. The next question that we have is, choose the correct chronological order of the given works on post-colonial criticism. You have to arrange these 5 works in chronological order according to their publication. And the correct option is option number 4, A, C, E, D and B. The next question that we have is, arrange the following works of John Story in their chronological order of publication, and the correct option is the first option, that is B, C, D, A and E. Now you have to match list 1 with list 2. We have some novels and the subtitles of the text, and you have to match them. And the correct option is option number 4, that is A will be matched with 4, B with 3, C with 1 and D with 2.
The next question is, which bibliography is considered with the close analysis of individual copies of book in the light of our knowledge of how books were produced in literary research? And the correct option is the second option, that is analytical bibliography. The next question is, choose the correct statement. There are 5 statements given on Arthur Miller, and you have to identify the correct statement. And the correct option is option number 4, that is A, B and E. These 3 statements are the correct statement. The next question that we have is comprehension passages. Now there were 2 comprehension passages. One was quite easy. It was like moderate. People were able to solve it. But the next passage was quite tough. Very tough actually, I would say. So इसका भी हम लोग जल्दी से आंसर देख लेते हैं. And then we will be done for the day. So according to the speaker, how does temptation disguise itself? And the correct option is option 3, as a virtue. What kind of temptation does the speaker say is most dangerous? And the correct option is that which argues one to sin in loving virtue. The third option. Now the next question from comprehension was, what internal conflict does the speaker express? And the correct option is the third option, a struggle between his virtue and lust. The next one is, what emotion is the speaker feeling at the end of the passage? And it was confusion and shame. The next question that we have is based on the comprehension passage, which was our next comprehension, and it was, thieves for their robbery have authority, when judges steal themselves implies what? The correct option is option number 2. Our next question 146, that is, what is the broader philosophical implication of the statement? It is not by the mode of representing and saying, but by what is represented and said. And the correct option is option number 1. The next question from comprehension is, the author's primary argument suggests that technical mastery in painting is a necessary foundation but not the essence of true art. The third last question that we have is, what implicit assumption about language and expression underpins the passage argument? And the correct option is the third option. The next question that we have is, what does the phrase possesses more power of delighting the sense while it speaks to the intellect imply about visual art? And the correct option is the second option. And the last question that we have is, what does the passage emphasize as the true measure of greatness in painting and writing? And the correct option is option number 4. So here we are done with our analysis. Not the analysis, but just the answer key of our paper 1 and paper 2 English. Paper 1 was our general paper. This was the answer key which NTA released yesterday night, and on that basis we have saw कि क्या है सही and what which among the following are not right. जिससे आपको अगर अभी तक सर्वर डाउन है तो आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही है और कितना क्वेश्चन गलत है. Now soon I will upload a video on this analysis of the paper of paper 2 English कि किस तरह के क्वेश्चंस है, आपको किस तरह से दिसंबर के लिए अपना प्लान करना चाहिए, आपका सिलेबस क्या रहना चाहिए, आप एक मैप कैसे डिज़ाइन करोगे, क्या क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा अनोनिमस थे और द पैटर्न वाज सेम एंड जस्ट दे हैव वाइडन्ड देयर एरिया, वो और इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं आपसे. एवरीथिंग विल बी cleared in my next video, which will soon be uploaded on my channel. Please subscribe to my channel, English Literature by Rashi Poddar. You can find other important videos related to your topic regarding UGC NET there.